हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और मैं हूं अली असगर और हम लेके आ रहे एक स्पाइसी, चटपटा, पोल खोल, चुलबुला, अनोखा चैट शो ऑन फ्रेंडशिप जिसका नाम है चड्डी बड़ी। Anything that brings in the money. ऐसा हाँ चल वहां से निकल, उधर से निकल आ जाए। आप रियाज करते हो? ये रोज करता है। डांस नहीं, हिंदी बोलने की। ये शायद नहीं करना चाहता है काम मेरे साथ। Who wants to take part in dance competition? Singing competition? Elocution? मासूम शक्ल को देखो। कौन से लैंग्वेज में जा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश के? कितना बनाया? नहीं, इतना कि हम आपको चुप करा के बोले none of your business. यंगेस्ट मैं 8वां हूँ मेरे डैडी Yeah. का, so I'm the last drop, so you know he was like So guys, welcome. We've now settled down, and here is Terence Lewis and Geeta Kapoor. They're not judging anyone today. We're on an episode called Chaddi Buddy. We are judging y'all. आपका पहला सवाल। पहला सवाल, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इधर। Yes. एंड टेरेंस जी, आपको सल्यूट है। इतने एपिसोड्स हमने शूट किए, इतने सेलिब्रिटीज यहाँ है, लेकिन हमारे टाइटल को मैच करके जिस अटायर में आप आज आए हो, चड्डी पहन के पहली बार कोई चड्डी बड़ी में आया है तो वो है टेरेंस। चड्डी बड़ी। बस हम ये नाम को एक्चुअली एक्सेंचुएट करने के लिए आए हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो फिर बंद करते हैं। चलो तो जी हम हमारा पहला सेगमेंट शुरू करते हैं बातों बातों में। गीता जी, गीता जी बोलो। गीता की जर्नी कैसे शुरू हुई? बहुत मुश्किल से और ये बहुत प्राचीन काल की बात है। बहुत पुरानी बात है। अली भाई, आर यू श्योर यू वांट टू नो? Yeah. संक्षेप में अगर संक्षेप में ये था कि घर के हालात बहुत ख़राब थे और ज़रूरी था पैसा कमाना। वो ज़रिया मुझे मिल गया डांस के थ्रू और छोटे मोटे शोज़ करते थे। फिर ऐसे करते करते मुझे दिखा कि है पैसा थोड़ा, बाहर नहीं मिल रहा था उतना। एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज 15। always wanted to be a dancer? No, I never in wanted to this be a dancer. field? या I कुछ was और शौक? studying. I wanted to be an air hostess. I wanted to work for the airlines. मेरा काम completely कुछ और था करने का मन, लेकिन Certain things are just written that it's supposed to be. this yeah, way. you know, once I met you, God decided कि इसको और दूर लेके जाओ इस आदमी से, इस devil in disguise। तो मुझे अच्छा कोरियोग्राफर बना के ऊपर वाले ने आगे बढ़ाया। Okay, एक मेरे मिनट। बारे में कोई अच्छा क्यों नहीं बोलता यार? मुश्किल है। और कमाल है, मुझे नहीं दिखाया कि ये इतना लीप होगा लेकिन बोलना नहीं है। Terence, you have Your journey. started a journey. Yes. But was it always dancing? Yeah, from the age of 6 I was dancing, but I didn't know I would become a dancer. ऐसा कुछ था नहीं कि मैं डांसर बनूंगा। स्कूल में I was like a नौटंकी kid, मतलब singing, dancing, music, elocution. I was like the poster boy of my school. So घर में पार्टी होती थी तो टेरेंस बेटा आके डांस I'm the youngest, मैं 8वां हूँ मेरे डैडी Yeah, का, so I'm the last drop. So you know he was like it's a common joke in our family, no? Okay. So my life is more by, you know, just taking a chance. Yeah. So it was more like who wants to take part in dance competition, singing competition, elocution, sports? So too much energy, somewhere it has to go. That energy still exists. Yeah. I have to tell you this. So ये it's just energy that. अब तक बरकरार है। So it was just that, ऐसे करते करते फिर डांस सिखाने लगा। I was studying microbiome, biochemistry. उसके बाद I did hotel management, then I did my psychosocial major. So by the age of 23, I had 2 degrees in my hand and I had 2 job offers. And by then I had also started teaching house to house. इतना बड़ा बन गया कि I had 70 to 80 kids. I was already earning 30-40,000 then, 1995. Wow. So then I was like, यार मुझे कैंपस इंटरव्यूज मुझे 20,000 मिल रहा है और मैं खुद 30,000 कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों ये नौकरी लूँ? तो फिर थोड़ा अहंकार भी था कि यार मैं अपना खुद का स्टार्ट करूँगा डांस क्लास। अभी घर घर जा रहा हूँ, मैं अपना खुद का खोलूँगा। माँ कोई आया नहीं मेरे क्लास के लिए, कोई आया नहीं। मैंने इतना उम्मीद रखा था कि ऑल दी स्टूडेंट्स जो मेरे 70-80, कोई नहीं आया, क्योंकि घर घर जाने में एक सहूलियत है ना कि Correct. कभी भी टाइम पे आ सकता हो, कैंसिल कर सकते हैं, अब उसी टाइम पे आना है, ड्राइवर को भेजना है। ये इतना दिमाग किधर है किसको? तब आई वाज ओनली 22-23, फ्लॉप। बट समहाउ संभल गया। थोड़ा मैंने देखा कि आजू बाजू में क्लास चल रहा है जिसमें फिटनेस चल रहा है, बोला कि यहाँ पे बहुत सारी औरतें आ रही हैं, तो मेरा शकुनी मामा दिमाग चला क्या औरतों को वेट लॉस कराना है, ये अच्छा धंधा है, डांस को भूल जाओ, इसमें लग जाओ। फटाफट कोर्स कर दिया 3 महीने का तलवारकस का। आई स्कोर्ड, आई टॉप द तलवारकस कोर्स। मधुकर सर वाज माय पर्सन हु टुक माय एग्जाम, ही इज द मेन गाय।
and he offered me a job and he started working as a fitness trainer and उसके बाद मेरा तो मतलब चांदी लग गया. वापस मैं रिक्शा से तो एक गाड़ी भी खरीद ली. Okay, Zen में जहाँ पे 7-8 डांसर्स मेरे साथ चलते थे, इंस्ट्रक्टर्स. So it was like lots of hits and misses, but it was a joyful ride. I'm just happy. I was just happy the day my parents said, "चलो ठीक है, तू कर ले जो करना है," because I was dying to just do what I wanted to do. So And I am just happy. 2009, that show happened. And Dance India Dance Three of happened. us came together, And magic happened. and then our lives changed. Yeah. Then it was a different journey Sure. from there on. So, Terence, you have 8 siblings. Yeah. उस वक्त टीवी रेडियो कुछ नहीं था. हाँ, okay, बापू के लिए, बापू जी के लिए. 6 बजे अंधेरा होने के बाद तो यार, So कभी after- अंधेरा भी He was a जरूरत very नहीं. He was a very hard-working man. Do not doubt his abilities. And amongst the 8 siblings, there is only a Terence Lewis who is in media and stardom, and the बाकी rest are are bankers, pharmacists, engineer, Teacher. teachers, professors. Yeah. So what mom and dad pursued for all 8, Yeah. 7 did, and you are the Black sheep. okay. I think you're a beautiful black sheep. Baba, black sheep. Have you any wool? Yeah, that's true. But he's a diligent boy So he just entered and he said, "I was spending time with dad." with dad. Yeah. So that was one thing which was like, It's strange क्योंकि हम जब इस उम्र में आते हैं Yeah. तब हमको रियलाइज होता है कि हमने उतना वक्त स्पेंड नहीं किया है पेरेंट्स के साथ. Yeah. एंड इफ वी आर लकी टू हैव देम आई थिंक वी शुड स्पेंड And enough time honestly, with I want to say this to this channel also. No matter whether your parents did the best or not for you, and sometimes some parents can also be toxic, and you can always say, "मेरे माँ ने ये नहीं किया, बाप ने ऐसे नहीं, it should have been better." But they gave birth to you. They brought you to Yeah. this life, and now forget the past. And if you can just give them, Just a little bit just back. little bit back. Definitely. मतलब आज के जमाने का श्रवण कुमार Why तू not? तो बात ही मत कर. You are a mama's boy, mamu. You Oh. take care of me now also. He is my good boy. Shammu, Shammu. Can you learn something from him, Bakhtiar? कुछ तो सीख मेरे से, तमीज से बात कर तू यार. He is senior. He has हाँ. worked more. इनके साथ मैंने इतना काम किया है. मैं तो खाली respect डांस के लिए लगा के रखता है. आज आज आप मुझसे पूछिए क्योंकि किसी को पता नहीं ना. बख्तियार इन 96 जब हाँ. मेरे ऊपर नीचे चल रही थी जिंदगी, हाँ. क्या चूज करूं. सो आई हैड ऑलरेडी बिकम डांसर टू कोरियोग्राफर करने मतलब इतना काम करने के बाद आई रियलाइज अरे यार जो मुझे मिल रहा है 1 महीने में, नए लोग जो आ रहे हैं वो एक वीडियो में बना के निकल रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा कि घर तो चलाना है और क्या करूं. तो कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, कोरियोग्राफी. सो आई कॉल्ड माई प्रीवियस बॉस बैक अगेन. आई सेड, so I called up Farah ji and I said, "मम्मा थोड़े पैसे और बनाने हैं, नया जरिया बताओ." So she said, मेरे पास एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है. और ये 96 की बात है. 1996 I rejoined her as an assistant. Wow. Where Bakhtiar came in for his first event with us. अच्छा. That's when Bakhtiar and I met for the first time. 1996. And since then ये मेरे गले में अटका हुआ है. तब से जिंदगी हाँ, ना बंद हो निगल गई. पा रही हूँ ना उगल पा रही हूँ इसको. 1996 ABCL Bangalore. I was performing Miss for World Alicia contest. Chennai. You all were doing a Miss World. different act, Miss Yeah. World, and Lonji was there, Yeah, and he favorites. said, "Dikra." Since 1996 Yeah. he calls me Dikra. Dikra, you have to join this troupe, and this is the girl. I said, "Where is the girl?" Back. ऐसा चौड़े में खड़ा है, गंजी पहना है, शर्ट टक्ड है, जीन्स है और पलटी. तो तब तो she was quite hot. Very hot. Yeah. You just see her pictures. Very talk about me? Outstanding. Yeah. Yeah. कैसे कैसे मैं मैं तगड़ी भी थी. मतलब not tagdi, you were But I like, was always big build. however hot she was. No, she was skinny also. Yeah. She Tukudi. was nice tight jeans, and I remember white kids, and shirt was always tied with a ganji kind of a thing. And I'm like, अरे यार कुछ नहीं तो इसके लिए तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अरे You always had a thing for curly hair, but yeah. फिर तनाज़ आई तुम्हारी जिंदगी में. तो हम लोग सब लोगों ने ना कर्ली हेयर वालों ने बैक सीट ले लिया ऐसा. And then the highlight was that you know that time you're young and you like, and you go there and you just saying hi, hello. I'm Bakhtiar this that. हाँ चल वहाँ से निकल, ए उधर से निकल आ जाए. And I was like, That is so me. and I was like, मुंह खोल दिया इसने यार. मुँह नहीं. She आवाज- was like a Easy. boy. She was like a buddy. One You thing. could never think of. "Eh,
You cannot think. You just like अरे यार मैं you know we talk अगर कोई लड़की यहाँ पे है जैसे हम I just use the washroom. मैं मोद के आ रहा हूँ. That's the difference when you talk to her. But then That's you the know difference we already. had. Yeah, You know, but same. Yeah, but also he came from this background where in his society and his community everybody talks with respect, Respect, and like, yeah, yeah. hello, how you doing? A pleasure to meet you. Yeah. कि जब आया classy मैं, ये Rani क्या boy, कर रहा है उधर जा चल निकल उधर. So he was like, what is this? This is some new world. so Gujarati. Terence, Gujarati. I want to ask you. Yeah. What do you enjoy most? Dancing on stage with Nora, or you like conducting your own dance classes? What if you had 2 hours? What would you like to do? If I had 2 hours, 1 hour dancing with Nora and 1 hour dancing and making her teach my students the steps. Nice, I like it. Maybe the students will be very happy also. Yeah, I Sir, agree. next time we'll come for your class again. Sir has never called me for his classes. I have never gone. I also want to go when Nora is teaching. But Actually, I when think you're teaching, You Nora, I know, want honestly, to Nora is a vibe. go. Of course she Her is. energy, her level of, Something you know, else. she's just amazing. Her You know what? energy But is. she brought she's- a new vibe She, to, yeah, she has. dancing. Yeah. So, with due respect, she is. She yeah, has, I just know Nora, who was like a Jallar girl coming for Bosco's rehearsals. Yes, yeah. And she was just in a track pant, track suit, and suddenly there comes media and there comes the song, Actually, and it's she's also- yeah, that transformed, song is and just she's great. like, अरे मैंने बोला, then I have to call up Bosco. भाई ये same ही क्या Nora? हाँ. Hey. And then we did a 5-minute conversation, which I can't. Yeah, So- we don't want to know that. Yeah. So. But talk But- about us. We Yes, have come. yes, yes. Thank you, Ali bhai. Yeah. जी जी चुप रहते. What do you enjoy the most? Judging or choreography? Both bring in the money. I enjoy both. Anything that brings in the money. ऐसा. देखो, choreography obviously is hard work. It's a lot of hard work. Yeah. And I think we did that in our times. Yeah. अच्छा. So अगर मुझे if I get paid to do the thing that we were thought never to do, pass judgment, I'm happy with it. पर अभी के जो बच्चे हैं या जो कोरियोग्राफी या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए एक एसेंशियल टिप आप दोनों की तरफ से. Dance सीखो. No, listen, I want to say this upfront, upright to all the people who aspire to do any craft. ना सिर्फ डांसिंग के लिए, आप कोई भी क्राफ्ट सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज वो क्राफ्ट सीखो. आते हैं हमारे Correct. शो पे बच्चे आते हैं and they come because they're known, they're influencers, they're known for 15 seconds of great dancing, and then they come there and they can't sustain for a minute, and it breaks our heart. No, I really I want totally people to agree. know this. Totally agree. Terence, एक बार होता है, हाँ. बहुत मेहनत लगती है हाँ. for a Guinness Book of World Record to be broken. हाँ. तुमने 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है. अगर किसी को नहीं पता हो तो आई विल रिपीट द सेंटेंस. टेरेंस लुइस हैज वन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्राइस. Was it that there was a chick who saw your abs and just said, Oh, I wish that was so easy. Yeah, that every person who's making this body in the gym would be a Guinness World Record holder. so was it that, or like what was the one word, one line that you would say that made me win this? The idea was, I believe by the time I finished teaching dance to everybody, I kind of realized that everybody can dance and anybody can dance. Everybody cannot become a dancer, but anybody can dance. Yeah. So the whole premise was, how do I push this concept? The best way is to teach it to non-dancers. So in Guinness World Record, we had people, anybody could come. They were not my students. Anybody could come, be there, and would learn the dance in 1 hour and perform it in 1 hour. So how many were there the first time? 1,000 something, something, something. And second? 5,000 something. And third? now third time was another one, which is not the numbers, it was a new style that I showed, and they learned it in that style. Indo contemporary is not something you can teach in Bollywood. You can still teach fast, but Indo contemporary requires time. But we said, let's try it, and we tried it, and they did it. So it was a just new style being new taught. style. Yeah, yeah. So you're working for the fourth. No, I'm done. Now the next generation will do. No, Yeah. अच्छा. Yeah. it's done. दूसरे भी कुछ करें. हाँ. कुछ Now I want तो छोड़े उनके to. लिए। अभी ना, it's like how you put FD and then you just wait. FD भी mature हो गया है. No, we are. अच्छा, आप दोनों जज हैं. हाँ. तो एक चीज पूछना चाहूंगा हाँ. दोनों से. आम आदमी ये जानना चाहती है कि जो डांस शोज वगैरह होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं. और ये रोना धोना
और एलिमिनेशन, सब कुछ। रियलिटी शोज के हिस्से होते हुए आप ये सवाल पूछ रहे हैं दूसरों की तरफ से पूछ दूसरों की रहे हो। तरफ मैं ये मेरा सवाल है। मैं तो सब जानता हूँ बहन, मैं तो सब जानता हूँ बहन, पर आम आदमी ये दर्शक जानना चाहते कि नहीं होता है। अब ऑफ कोर्स काफी हद तक स्क्रिप्टेड ये होता है कि हाउ डू दे वांट टू पुट द कंटेंट इनटू प्लेस, कौन सा कंटेस्टेंट कब आएगा, कब होगा, ये वो। बट आप इमोशन को कैसे स्क्रिप्ट कर सकते हो? These are not actors. Dancers are not actors. You can't fake We somebody. are not actors. We are not actors. So there's a level of where it can be shown. Exaggeration हो सकता है of the truth, a little exaggeration. But वो it cannot be a lie. What we see is what we have to talk about. आप Yeah. इसमें क्या स्क्रिप्ट करोगे? गंदा किया तो गंदा बोलेंगे, अच्छा किया तो अच्छा बोलेंगे। Correct. हमारे बोलने ना बोलने से आप क्या कैमरा से छुपा पाओगे कि उसने क्या अच्छा किया और बुरा? Correct. नहीं कर पाओगे। So So I- स्क्रिप्ट कितना लिखोगे आप? So actually ये स्क्रिप्ट और सवाल मैंने पूछा था. ऑफ कोर्स आपने ही पूछा होगा। No, because I'll tell you. बेहुदा In सवाल ये 2000, नहीं हो in 2007-8, me, Krishna Abhishek and Nache Mayuri, Sudha Chandan, Sudha Chandan. we were judging a show, and there was Rahul, Dharmesh, and all these guys who had just come to Bombay to do this 2007-8, and we were sitting there. And for me, it was clear cut that Dharmesh was the winner, hands down. He did the same Move. what he did in Z, and I was like, shit, now at least let this boy Go ahead. get his due. On our face, everything is cut. Marks by me are the maximum. Then someone is like, there is a 5-mark gap between the first and the Wow. second. The second guy won the show, and blatantly, some of the judges were sold. Oh really? Yeah, yeah. So I'm like, you know, I have and to then say I'm that's like- shocking to me. That's where does this boy go? Where does this Sir Dharmesh go now? The original Sir Dharmesh go? I was just stuck. But maybe because he didn't win there, you know, that was this place reason for him to kind of, you know, get a better platform probably. See, But sometimes, you know, you don't know. All I'm going to say is that we have just done our auditions right now. Right. And I can tell you between me and Geeta, and we've been in the show for 15 years judging. If we don't like somebody, we don't like somebody. Also today we put our foot down and say, don't tell us what to say. We just did क्या this बात right. है? Yeah. we just did an audition. This time we had a concept called Chauka ya Mauka. Mauka means in the audition you can go to the next round. Chauka means if you take the Chauka, which means you compete then and there with the next contestant, and if you match up, then you're forget no mega audition, no selection. You're straight into the show. In the first audition round itself. And if you don't, And if you straight don't, home. straight home. This boy was 14-year-old. He came in, he did a great performance. Our channel thought, okay, chalega. He was fantastic. But he said, damn, he's damn good. And he was supposed to press the buzzer. We thought, मौका लेगा, 14 साल का लड़का है. He won't take a risk. थोड़ा और prepare करके mega audition. Then and there he says, Chauka. And Chauka भी किसके साथ भिड़ा हो? One of the finest contestants of season 3, Shivanshu. And that boy performed like such a dream that we looked at the channel and said, तुम्हारा तो गया, ये जाएगा आगे, top 12, here you go. This is the reality. This has happened in this season. So he was better than the third का winner. क्योंकि एक Not better, you didn't match up. performance- Yeah, ये match up. वो उस वक्त जो होता है वो होता So है। there is कैसे a magic. लिखोगे? There is a magic Magic. of You that. cannot write Or them off. then One one minute. thing I like about the channel that we work with, and Ranjit especially, who's our boss, he said like, किसी का किस्मत है ना, उसका मत छीनना. किसी और को एक मौका बहुत देना है ना, बहुत सही. किसी को मौका देना है ना, एक्स्ट्रा मौका देना है, दे देना. लेकिन किसका किस्मत है, जिसका हक है, उसका मत छीनना. बस ये फिलॉसफी हमारा है. पर ऐसा कोई बंदा हाँ, जिसने यही बंदा, ये बंदा. कि मतलब फर्स्ट राउंड में किसमें इसके बहुत ही डफर I लगा. don't think he performed very well कभी-कभी for होता them. है ना, उन लोग But बोलते on हैं, the stage, see, I'll tell you how much freaking flew, there's man. there's a limit to how much they can script also. Yeah. तो उनके दिमाग से वो होते हैं कि देखो ये जो पहले 3-4 आ रहे हैं वो शायद वार्म अप वाले होंगे. Thereafter you will get better Better. contestants coming in. और कभी-कभी वो वार्म अप में से ना एक कोई निकल एक जाता है. बंदा ऐसा आता ये है, वो because उनमें मैं बोल से रहा था. हूँ, एक किस्मत लेके आया है. तुम लोग मुझे हटा ही नहीं सकोगे. हाँ. I said, That you can't change. This is amazing. And that's what makes the show very interesting because it's unpredictable now. This is not a scripted Yeah. question. It's just my No, no, question. no. Scripting. We want to learn scripting कैसे होती है. वो अगला है. You all are judging Yeah.
probably now. 15 15 years, exactly. Exact 15 years. Okay. You'll have seen a generation. Absolutely. You've seen a novice becoming a professional, becoming a teacher, becoming Yeah. a judge. Yeah. वहाँ तक. Yeah. Do you think that the caliber of Indian dancers हाँ. is better from 9 to 14 or 15 to 21? Because I've seen She does both. both genres, and I think the alpha generation now is too smart. Too smart. The 9 to 14. The 9 to 4. They come with a certain ease. हाँ, Ease तो है comfort में आते हैं। ease है. वो बहुत ही मतलब they're not frazzled with life, and that's what we see in the dance. They're very very relaxed. कोई म्यूजिक चल रहा है earlier से हाँ मेरा next choreography ना how we should think on the chair next क्या है इसके बाद ये इसके बाद है करते हैं कुछ, लेकिन हाँ ऐसे मतलब बैठते हैं। एक है वो। So- you will see your kids today bonded. So there is a real story where ZS, when he was small, ZS, my son, when he was small, he danced, and he was good. You all were a dancing family. Yeah, he was Always. good. और मैंने गीता को वीडियो भेजा. मैंने बोला कैसा है? She will never. She is not one of those के. I think you should. You know, he's fantastic. जितनों को भी भेजा, fantastic. What a boy, what a cutie there. इसको डांस क्लास में भेज और मेहनत करा. क्या बात है. That was the line, and then I said, भैया ये comment है, and then the whip came out, and then I started with him, Yeah. and then he had to lose weight because he was chubby and there, and now he's with a Rocking it. 4-pack and he's क्या बात है. there How cool and is he's that? Proud Yeah. father. yeah You yeah see that? and Lovely. he's मैंने बोला बॉस तू यहाँ मेहनत नहीं करेगा ना, ये गुरु है, इसने कमेंट किया, किसकी सुनेगा इन तीन चूतियों की, इन तीन लोगों की या इसकी, तो फिर वो बाहर आया. क्या चुतिया. I am happy. नो सब वहीं उसका से चुतिया निकलते हैं. सब वहीं से निकलते हैं सर. So coming back to dancing. अच्छा नहीं, वो डांसिंग से पहले मैं तो मुझे तो पता है, जनता जानना चाहती है. Of course, अभी भी आपको सब पता है, लेकिन मुझे जनता तो सब जानना पता है, पर जनता जो जनता अंतर्यामी हो, अंतर्यामी है. पूछिए. आप लोग अभी भी रियाज करते हैं? आप मैं नहीं करती. मुझे डांस का कोई भी रिहर्सल या रियाज करके बहुत टाइम हो गया. अच्छा. आई थिंक पोस्ट माई इंजरी एंड माई बैक प्रॉब्लम इट इज काइंड आई थिंक टिल 2-3 years ago I did. और I was always blessed with a wonderful team, so सर Yeah. आप Not ये the रोज way- करते हैं. डांस नहीं, बकवास. हिंदी बोलने की. दोनों हो की जाती रियाज है. करते दोनों- हैं. हाँ वो हो बिल्कुल. जाती है क्योंकि मेरे क्लास में जो मैं सिखाता हूँ चाहे टीच इवन नाउ जो लड़के आते हैं वो गरीब मोस्टली टाइम दे कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स. और जब मेरी हिंदी की चिंदी हुई थी और बहुत मजाक उड़ाया था, तब मैंने बोला कि भैया क्या करें, तो सीधा क्लास में गया बोला कि अब से कोई अंग्रेजी में नहीं सीखेगा, बोलेगा हम आपको हिंदी में बात करके सिखाएंगे. एंड दैट जस्ट प्लस आई स्टार्टेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हिंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया आउट, नवभारत टाइम्स इन. Good, बाकी yeah. का शो भी जो है अभी वो टेरेंस हिंदी में बोलेंगे. और मैं इंग्लिश वो में. कब से आई थिंक शुद्ध हिंदी में ही बात कर रहे हैं. कि यार रियाज तो करना पड़ता है बट नॉट द वे आई यूज्ड टू. एक जमाना था जब हम रोज करते He used थे. to sit with a book. या हिंदी की पढ़ाई की है टेरेंस अभी थोड़े ने. 10 मिनट पहले तवज्जो बोल दिया हाँ. भाई ने. अरे भाई कसम से. वो आते हैं और बलगम वाली उर्दू. from the epiphanies. नुक्ता लगा नुक्ते के. लगा. गीता एंड टेरेंस नुक्ता लगाया जाए तुम्हारी बातों पे भी. 2009 से 2024 हाँ. जजिंग कर रहे हो, इतने सारे कंटेस्टेंट्स, फैमिलीज, देयर इमोशंस, मेनी प्रोडक्शन हाउसेस, मेनी चैनल्स, मेनी स्टाइलिस्ट, यू हैव सीन मेनी ऑफ एवरीथिंग. Yeah. तो इतना शॉर्ट ही सवाल है कि इतने सालों में कितना बनाया? नहीं इतना कि हम आपको चुप करा के बोले नन ऑफ योर बिजनेस. Good. Okay. बहुत अच्छे. So that was my अंदरूनी Of course, we know where it's मारवाड़ी coming from. सवाल. Actually, you all have to name if you all can. हाँ. कोई ऐसे शिष्य होते हैं या कंटेस्टेंट्स होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है. हैं. 3 names है. from 2009 to 2024 जो 3 आपके नाम है जो बेस्ट थे. है. मेरे कौन? हैं. चल रेडी हूँ मैं. My first one would be Raghav. I still feel he is the most purest soul and an artist. If I had a son, Raghav would be my son. Wow. वाह. Okay. If I Favorite. wanted a daughter, I would want a daughter like Shakti. Oh wow. And she was my student also. Like the relationship I have with her also is like the teacher-student relationship is just amazing. And she's such a
Like लड़की हो तो ऐसी हाँ, yeah. और लड़का हो तो ऐसा ऐसा। शरारती. These are my two. And yours, Geeta? I think Faisal, because he was 13 years old when he came, and I think Yeah. the first time I ever felt this, like, अगर मेरा बच्चा होता तो वो बिल्कुल आपकी तरह हो. For me, that from Little Masters. Of course, in terms of favorite, I'll hold Siddesh very close to my heart because my first season, Yeah. I had never mentored anybody. So for me, he was that one Yeah. person who carried on Yeah. till the end, and I think that's why also we like had a Yeah, a bond. until date we're still in touch Yeah. and whatever. And Dharmesh is very close to my heart because Dharmesh was that Yeah. one contestant who I wanted. He wanted to go somewhere else. It started on a Negative note. not on a negative, but मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं Wrong note. ये शायद नहीं करना चाहता है काम मेरे साथ. और फिर मैं जिद पे थी कि इसका मन बदलना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से सब कुछ दे दूं, उसका मन करे तो काम करे, नहीं करे तो फिर उसका नुकसान है. Yeah. अल्टीमेटली बिकॉज ही हैड टू कम इनटू माय टीम, आई हैड ऑलरेडी चोजन हिम. उसके ऊपर मेरा और रेमो का भी थोड़ा सा हुआ था. बट इवेंचुअली टुडे ही एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल, very close and very I had seen that episode. Yeah. I had So seen for all me, of these Dharmesh episodes. for Where me he is said like- Also कि for- I love her, Yeah. हाँ. but I want to go here. Yeah. but but I think Raghav is a common favorite love. ये जो तुम लोग इतने फ्रीली बात करते हो, ये दोस्ती कब और कैसे शुरू हुई? And how did you like? Where did the sparks come out? कि बस this is a good guy to keep as a friend. I think after we started judging Supermoms, yeah, आपको इनमें Govinda मालूम was a catalyst for us. So- he was a third judge. DID was not the 2000. DID DID we were में हमारे पास competitors. time नहीं था. Time नहीं था. We were competitors. चल Monday गया. to Friday में dinner कभी साथ में नहीं किया. Like, Never. बिल्कुल. But we have gone out for dinners now. After that, after Supermoms, you know, when we started judging a show where Lunch, we dinner. lunch, dinner. Okay, I want to know this. I sharing want to our know books. this. Very known choreographers. Yeah. Full line. Do you think that assistant choreographers actually create and make a song? Not true. Not true. Not true for everybody. Not true for everybody. For some, I would yes. have- हम अपने टीम्स को हमेशा देते ही हैं क्रेडिट, बिकॉज आवर टीम्स एट दैट पॉइंट व्हेन वी वर मेंटरिंग वर वेरी Yeah. लाइक दे वर हेवीली इन्वॉल्वड. Yeah. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज, I don't think that applies. But All also I have credit a- can I be have a given. different point of view again, from Geeta. It's not against, but it's almost similar. So there you have to understand the definition of an assistant and understand the definition of choreographer. A dancer, an assistant is also a dancer. Okay. A choreographer has moved away from that and now is the eyes and the brains of the choreography. Correct. So he has to understand ki what will look good on camera. It's the brains that is working. A choreographer is the brain of the Absolutely. of the song. He designs the song. He's visualizing कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा. But it's not like the value is less or anything. It's just that you have to have a sense of what needs to work with that song. So That's more what- of the camera angles and camera more of the- angles, not just technically, not yes. just technical. Also to know कि this step will not work. And say, but you will have to kind of simulate and say, okay, no, this will work. Which I this think will work. he's also been Combination. part of. Yeah. Yeah. क्योंकि But यहाँ if पे a भी choreographer rehearsal is पे- just setting the whole choreography and you just coming and saying, okay, this is good, let's shoot, then of course, then that's an integrity I've issue. not been now part it's of your that. integrity. Yeah, Yeah. Then you should give credit Yeah. to the assistant and say, this is the person who choreographed it and I have designed it and become the director of choreography. What about actors when you're Yeah. like choreographing? Yeah. What about actors? Superstar हो अलग बात है, but otherwise who are difficult and want to give steps. Yeah. And the choreographer knows यार ये अच्छा लगेगा, नहीं हो रहा है change करो. Funnily, the ones who gave me the trouble were never the bad ones, were the ones who were very good. Because they wanted to only show what they could do. In fact, the ones who are not good, then it's बनता ही है, मैं anyways मैं बेकार हूँ यार, why do you want to mess me up and make me look like a piece of. So then you have to be a little bit more considerate as a choreographer. कि At the end of the day, our job is to make the actor look good, not my ego. Coming to you guys now. Finally. So now we have one segment called जान पहचान. आप इनके बारे में कितना जानते हैं और Oh. आप इनके बारे में कितना जानते हैं? So Geeta, I'm going to ask you about Terence. Wow. Okay? And Terence, Ali will ask you about. Geeta. Yeah. Say, So you can say Geeta. I'll fail. हाँ.
No, babes, I don't think. I think you know more. स्कोरर about है me. यहाँ पे, आपको पॉइंट मिलेगी तो वो 1 मार्क गीता के नीचे लिखेगी, आपको पॉइंट मिलेगी तो वो टेरेंस के नीचे 1 मार्क लिखेगी। हमको तो पता ही नहीं था काउंट कैसे करते हैं चलो गीता, हाँ, बोल। टेरेंस का फेवरेट सिंगर यू कांट से। डिपेंड करता है कौन सा जॉनर है। अगर गजल्स हैं तो अलग हैं। करेक्ट, सी इज माय फ्रेंड। एंड ही लाइक्स ओल्ड सॉन्ग्स। न्यू एज वाले हैं, न्यू एज, न्यू एज उसकी आवाज में दर्द है। अरिजीत सिंह आई थिंक। दैट्स माय फ्रेंड। 1 पॉइंट। खत्म है शो। टेरेंस का फेवरेट कोरियोग्राफर। टेरेंस का फेवरेट कोरियोग्राफर ही इज फ्रॉम द साउथ। ए ले आंसर दे दिया यार। मे बी प्रभु देवा, मे बी। तो हिंट दे रहा है। Because you know what? Because we also No, open the, because we think only हाँ, Bollywood, मतलब but there's a. But you can't say. Okay, sorry, no anything. hints. Favorite channel that Terence likes to work with out of all the channels. likes to work with Likes to work. He likes that any channel. channel that pays him more. ये हम दोनों का प्रॉब्लम है। हमें अगर किसी और जज से ज्यादा पैसे मिल रहे, वो चैनल हमारा फेवरेट है। अभी के लिए कौन है? सोनी। Yes. क्या सोनी। गाना है यार, ये हिंट देता ना। क्या मैंने हिंट नहीं दिया? अभी के लिए कौन है? अभी के लिए मतलब अभी इस के वक्त टाइम कौन है? yeah. चार है ना? Friends सोचा भी नहीं। besides Geeta that he has in the industry. None. Right answer. सही जवाब। None. Okay, I didn't know the name Terence of the का album. फेवरेट सुपरस्टार कौन है? इंडियन या Hollywood. वेस्टर्न? हॉलीवुड आई थिंक। इज इट मैथ्यू मैकॉनहे? Yeah. सही जवाब। That is best. अमंग्स द विमेन आई थिंक इट्स सलमा हैक। बिरादर कभी बैठेंगे साथ में। हमें भी बहुत अच्छी लगती You है। know, it's just amazing woman Yeah, Yeah. beautiful. Yeah. inside out. His best choreography till date, according to him. I think when he did that अंग लगा दे। धुनची वाला सॉन्ग, धनुची। धुनुची वाला सॉन्ग क्या था वो? अंग लगा। अंग लगा दे। लगा दिया। अंग लगा दे। Okay. I think that could be his favorite. और जब हमने पूछा तो उनका जवाब था you're wrong. उनका जवाब था none because my work is in movies. I could have done way Of better. course he could, but I'm saying till date, na. I mean, आगे जो So करे. for him it For is- me, it will never be satisfaction. I mean, he's also a perfectionist. So, but I think okay, don't give point. उनको पूछा गया था रोमांटिक डेट पे जाना चाहोगे या शूटिंग, तो I will tell you. Shooting. दिन में। गलत जवाब। दिन में। दिन में शूटिंग, रात को रोमांटिक डेट चले जाएंगे। हाँ, मतलब अगर वो शूटिंग ऑप्ट कर रहे हैं तो बाकी के टाइम में रोमांस No, करेंगे। उनका जवाब था मैं एक ही चीज क्यों करूं, मुझे सब करना है। दिन हाँ, में but that shooting, is रात में Terence. dating। Extra energy. I had asked him, Every drop, the last drop counts. The last drop was most potent. Yes, I know. I can see the energy. Okay. sex for life, friends for life, what would he choose? Friends for life. गलत जवाब। हाँ, 2 कदम आगे निकल चुके हैं। तुमने चेंज कर लिया? Oh no. I'll tell you. Sex for life? चलिए, आंसर क्या था मेरा? I am my own friend. बेस्ट फ्रेंड। Best friend. I will never disappoint myself. ये फंडा है हमारी लाइफ का। Correct. We will never disappoint ourselves. Yeah. Then I asked him, you have to name one. According to him, what would be the right answer? Shilpa Shetty या गीता कपूर? What That's would an he- easy answer. What would his answer be? I think it should be Shilpa Shetty, but unfortunately it's me for you. सही जवाब। No, don't. पूछो Very, गीता very easy. फेवरेट कार। Easy there. हाँ। ओके हाँ। सर, बोलिए सर। गीता कपूर की फेवरेट कार। बड़ी होनी चाहिए। ये जिंदा होना चाहिए। चलना चाहिए। चलना चाहिए। लॉन्ग रनिंग होनी चाहिए। ऑयल होना चाहिए। ऑयली Guys, पेट्रोल होना चाहिए। हम लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं। वही भाई हम भी जो चल पड़े वो गाड़ी। I think you know she likes it Big. a car to be big and manly. So it'll be one of those big cars. Hummer. Yes, सही जवाब। भाई जवाब। Yay! Babs. फेवरेट कोरियोग्राफर। First, of course, Farah for sure. Second could be Saroji. Yeah? सही Correct, जवाब। सही जवाब। Oh, really? सही जवाब। Fantastic. Yeah. फेवरेट चैनल। पैसा पैसा कहती है, पैसे पे तू मरती है, सोनी सोनी
शाबाश सोनी सोनी शाबाश। टेरेंस के अलावा फेवरेट फ्रेंड्स? I think one is Firoz and Ali. Not Ali. I'm forgetting his name. Contestant है हमारा. Altaf. गलत जवाब नन I don't But have, you're very besides close. you, I don't have friends. ऐसा मतलब. Okay. Yeah. फेवरेट सुपरस्टार? Govinda Salman. One of the two. Yeah. सलमान बिल्कुल ये सही सलमान। जवाब Yeah. गीता की बेस्ट कोरियोग्राफी? रोशनी रोशनी से करीना. सही जवाब But that You're getting too many right. I'm feeling very like because I'm that getting FOMO. song also no, I've never seen Kareena look. But at that given point of time, Yeah. Santosh Sivan was like on another level with riding on a wave. फ्रेंड्स के साथ डेट या बॉयफ्रेंड के साथ डेट? ये अलग अलग जरूरतें हैं यार. You can't mix the two. This don't mix anything. अगर रात को- I am very clear. I दिन don't में फ्रेंड्स रात को बॉयफ्रेंड के साथ फ्रेंड्स के साथ दारू पीने बैठना स्लैश बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना. No, very. Let's take the daru word out because. Why not? I don't have a problem. Okay, friends के साथ दारू. Right. Good सही. choice. Correct. That's very clear. Yeah. She's very clear in her I priorities. would rather. Dates आते जाते रहेंगे. Yeah. दोस्ती See, जो रहती है ना exactly what I very said. difficult because you don't make friends easily. Dates you can make and break. उनका जवाब था बॉयफ्रेंड तो सीजन की तरह आता है ना, विंटर रेनी सीजन समर सीजन. Season भी नहीं सर. But are these very difficult questions? Because very obvious answers, to be Yeah, honest. but I mean, I they're keep very it very obvious. simple Simple, okay, to ठीक है. know कि बैठे No, हो no, साथ में. this much तो yeah, I know. तो- This much I would know. एक शब्द का जवाब, हाँ. एक शब्द का हाँ. जवाब विदाउट वेस्टिंग टाइम. हाँ बोलना. गीता के लिए सवाल, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट पर्सन इन वन वर्ड. Oh God. फॉर यू गीता, रणवीर सिंह, Energetic. फराह खान, My mother. बॉस्को सीजर, Very talented. SRK शाहरुख खान, Charming. रेमो, दोस्त. शिल्पा शेट्टी, बहन. नेपोटिज्म. Exists. ओके सर, Yes, sir. आपके लिए हाँ सर. डांस क्लासेस? जरूरी है. शामक? Legend. Records which are broken. Records. Oh, records broken. Necessary. गीता? दोस्त. Buddy. Parents? Enough. नोरा? सुकून. आप मैसेज भी कर सकते हैं. ये trick question. जवाब Just friends. झूठा. मैरिज? Institution. Well done, both of y'all. Thanks. And You are very quick like I that. just feel you were a bit slow when it came to one name. So you won that this round. Thanks. And now we'll take a break because I have to prepare your shots. What And shots? Never have I ever. Oh, we'll be drinking a lot. When she used to assist and we used to dance and we were like, I was dancing behind. So we were friends and we would come and hey Geeta, एक मिनट के बोलूँ. In the ear, Yeah. and she was like, Horrible. Why fart and waste it when you can burp and taste it? Correct. I agree. and Hello, ma'am. Thank you. Blossoms. Oh, much needed. आपके लिए. Thank you. Thank you. Let's take a picture and then that's the end of the episode. Thank you so much, guys. Thank you. अरे बस कर. देख हेल्प मत. ये बता दूं, इसे बोलते हैं एक्चुअल दोस्ती. बाबू Stop the babu. सेक्स. Okay? Finally यहाँ पर उतर गया तू. Sex in the car. सडनली स्पीड ब्रेकर पे आ गई कार. Okay. Yes, next. ओहो दादा. और मैं कौन हूँ? एक्चुअली वो मसाज के बाद मुझे याद नहीं आ रहा. हाय मैं हूँ भक्त बिलानी और ये है अली असगर और हमारा एक बहुत ही फनी हिलेरियस शो है जिसका नाम है चड्डी बडी. या इट इज पावर्ड बाय ब्लॉसम सैलून एंड स्पा. गाइस जो भी चड्डी बडी देखेगा उसे सब्सक्राइब करेगा और मुंबई में होगा या मुंबई ट्रैवल कर रहा होगा उसे सिर्फ ब्लॉसम सैलून एंड स्पा में आके बोलना है चड्डी बडी और आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट. ये कैसे है? So आइए बोलिए चड्डी बडी इन ब्लॉसम सैलून एंड स्पा एंड गेट अ फैंटास्टिक डिस्काउंट. चलो चले चिपले हाउ ले लो
कहाँ? बेटा देख रहा है I know Baksar Irani और मैं हूँ अलियासगर and we are together coming in a fantastically amazing show called Chatti Buddy. It is about friendship, it is about a jodi, and it is powered by Derma Life Clinic. And let me tell you the advantages of having this sponsor. Okay, he's gonna come on board. He is gonna give you a voucher when you land there. वो दिल्ली में है, तो अगर आप जाते हो और वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट कराते हो, फेशियल या हेयर, आपको मिलेगा स्ट्रेट डिस्काउंट. और अगर आप दिल्ली से नहीं हो और आप हेयर ट्रीटमेंट कराते हो, तो आपको मिलती है फ्लाइट टिकट. How's that? So go there and just say, Chatti. Buddy. ये नहीं करना, डॉक्टर नहीं देगा डिस्काउंट. So Chatti buddy, just use the code. And yeah, before doing anything, go to our channel. It is down. Yeah, please subscribe to our channel, follow us, like us, and the link is there below. किधर है? उफ, दिखाई देना वहां पे लिंक नीचे, तो यहाँ भी पॉइंट आउट मत कर नीचे. So just subscribe. Dermalife Skin and Hair Clinic is a highly regarded facility trusted by celebrities in New Delhi. Clinic is led by Dr. Gaurav Garg, certified dermatologist with extensive experience in hair transplant procedures and cosmetic treatments. Clinic offers a wide range of services like hair transplants using the boosted FUE technique, which ensures high density and natural looking results by avoiding damage to hair roots. Dermalife is known for skin treatments such as laser hair removal, acne scar and anti-aging procedures.